for natural numbers x, y, z. See, these are three different natural numbers x, y, z. Do not consider they are same natural numbers. Okay, x, y, z are three different natural numbers, right? You at least know this. Xy plus yz is 19, yz plus xz is 51. So xy plus yz is 19 and yz plus xz is 51. Now what I did, this is equation 1 and this is equation 2. So equation 2 minus equation 1, which is nothing but xz minus xy is equals to 32, right? Now see, what am I getting? Difference of two numbers is 32, right? I have to minimize whom? XYZ, right? I have to minimize XYZ. I have to find out two smallest numbers whose subtraction is 32. Tell me two smallest numbers whose subtraction is 32. Can you tell me? Two smallest numbers whose subtraction is 32. Which one subtracting will give me 32? Why I am taking smallest numbers? Because I need to minimize XYZ. So XYZ will be minimized only 34 when minus XZ is 2. minimized and XY is minimized. Have you understood this thing? XYZ will be minimized only when XZ is minimized and XY is minimized. So I have to find out two smallest number whose subtraction is 32. Tell me what are the possible ways? So 33 minus 1 হতে পারে, বাট তারপরে 33 x আর minus y 1. আলাদা করা যাবে না। Yes, 33 minus 1. This is one possible thing is there, but in that case, x equals to y equals to has to be 1, right? In that case, x equals to y equals to 1, but x, y, z are three different natural numbers. That is why it is given that for natural numbers x, y, z. Right? You understand? Okay, so x, y, z is Yes, 1. In that case, z will be equals to what? 33. Right? If you put this value in this equation, do you think it will be satisfied? 1 plus 33 is 34, but it is given 91, 19. So this option is not correct. This option is not correct. What can be the other options by which smallest two numbers which on subtraction will give 32? Tell me. 34 minus 2. 34 minus 2, that is 32. In that case, my xy is 2. So what can be? One thing can be x is equals to 1 or y is equals to 2, and x z is 34. In that case, if I take x equals to 1, my z is becoming what? 34. If that is the case, let me see whether it satisfies this equation or not. Xy, which is 2, and yz is 68. No, it is not doing, but it is not becoming 19. But we can reverse the order. We can I mean do vice versa of it. So xy is equals to 2. I can make x equals to 2, y is equals to 1. That is also possible. If that is the case, then xz is equals to 34. So if x equals to 2, z will be 17. Now let me see what is xy? 2, right? What is xy? 2 into 1, 2. And what is yz? 17 into 1, that is 17. That is equals to 19. So x equals to 2, y equals to 1, and z is equals to 17 satisfies the condition that the difference between xz and xy is 32. Also, it satisfies this first equation, xy plus yz is 19. And if it satisfies the first equation, hopefully it will satisfy the second one also. We can check it. Y is 1, so put y as 1, z is 17. So 17 plus xz, what is x? 2 and 34. So 17, that is 34. So 34 plus 17 is 51. Satisfied. So what is going to be the minimum possible value of x, y, z? X is 2, y is 1, z is 17, that is 34. Did you understand this, Dipakshi, or no? It's a little bit understood. Okay, I am explaining it again. Okay, just focus on this. Otherwise, if you think of, I mean, looking into this later, that later point will not come. Just have little bit of more patience and focus on this sum. This type of sums are filled up in CAT. Okay, they will give you three variables and not a single equation. Okay, see, for natural numbers x, y, z, that means three of these natural numbers are different, unique natural numbers. Okay,
xy plus yz is 19, yz plus xz is 51. I write down these two equations. Okay, then what am I doing? I am subtracting equation 1 from equation 2, which I already told you in the beginning. Equation 2 minus equation 1 करके क्या मिला? I got xz minus xy is 32, right? xz minus xy 32. यहाँ तक समझ में आया? xz minus xy is 32. हाँ सर, ये बात तो कर ओके चुके हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. सो मेरे इफ आई वांट टू मिनिमाइज एक्स वाई जेड, आई नीड टू मिनिमाइज एक्स जेड, आई नीड टू मिनिमाइज एक्स वाई, यस और नो? इफ आई हैव टू मिनिमाइज यस सर। एक्स वाई जेड, मुझे एक्स वाई को मिनिमाइज करना पड़ेगा, वाई जेड को मिनिमाइज करना पड़ेगा और एक्स जेड को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम एक्स वाई जेड निकलेगा. और मुझे क्या मिला है इधर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक्स जेड माइनस एक्स वाई इज 32, राइट? So I have to think about two smallest numbers whose subtraction is 32. ये अगर एडिशन होता और झमेला हो जाता, subtraction इसलिए बच गए. Okay, I have to think about two smallest number whose subtraction is 32. So what can be the different cases? xz 33 लेते हैं, xy 1 लेते हैं, और इसको छोड़ के और कोई केस है इससे छोटा केस है? Can you take xz as 32? You will not be able to do that. If नहीं you take सर, xz as 32, xy को 0 लेना दिस पड़ेगा, इज but द xy स्मॉलेस्ट। natural number, xy natural हाँ number, so you cannot take 0. So xz 33, xy 1. Okay, if this is the हाँ case, then what is going to happen? X equals to y equals to 1. x और y दोनों को 1 होना है, तभी दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, because you cannot take any fraction. और xy अगर 1 है तो xz 33 है, x अगर 1 हुआ तो z कितना हुआ? 33, राइट? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। सर xy 1, 33 की वाला भी फिर से बोलिए। हाँ xy 1 है, xy अगर 1 है तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 1 हो सकता है ना. दो नेचुरल नंबर का हाँ प्रोडक्ट 1 हाँ कब होगा? जब दोनों ही 1 होगा, लेकिन दोनों तो यूनिक वैल्यूज होना हाँ पड़ेगा. सो ये कंडीशन रॉन्ग हो गया, ठीक है? हाँ एक्स वाई जेड हैज टू बी 3 यूनिक नंबर्स, so ये कंडीशन रॉन्ग हो गया. नाउ व्हाट अदर कंडीशन पॉसिबल? एक्स जेड को 1 बढ़ाते हैं, एक्स वाई को भी 1 बढ़ाते हैं, तो एक्स जेड मैंने 34 लिया, एक्स वाई को 2 लिया, तो इससे क्या आ रहा है? मेरा 32 आ रहा है. अभी इसका भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस करेंगे. तो एक्स वाई मैंने क्या लिया? 32. सो ये क्या, देखो, एक्स जेड माइनस एक्स वाई. सो एक्स वाई क्या है मेरा? 2, और एक्स जेड क्या है मेरा? 34. एक्स वाई 2 है, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है? x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2. एक्स जेड 34 है, तो क्या हो सकता है? अगर x 1 लिए, इधर मैं अगर x 1 ले रहा हूं तो z मेरा क्या होगा? 34 होगा, राइट? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अभी मैंने ये हाँ हाँ कंडीशन तो आ ले गया लिया, समझ। अभी मैंने ये तो ले लिया, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि नंबर्स मेरा करेक्ट है कि नहीं. उसके लिए क्या करेंगे? पहला वाला इक्वेशन उठाओ, इक्वेशन 1 उठाओ, उसमें वैल्यूज पुट करके देखो 19 आता है कि इक्वेशन नहीं. में पुट करेंगे। x 1, y क्या है? 2, तो 2 इंटू 1 2 बन गया. y क्या है? फिर से 2, और z हाँ क्या है? 34, तो 2 इंटू 34 तो 68 हो गया. 19 होगा कैसे? पॉसिबल नहीं है. हाँ नहीं। थोड़ा सा इंटरचेंज, थोड़ा सा वैल्यूज को ट्विक करते हैं. एक्स वाई 2 ही है, लेकिन इस बार x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, और x z 34 है. अगर x मेरा 2 है तो z क्या हो रहा है? 17, राइट? सो व्हाट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड इन दिस केस? एक्स वाई मेरा क्या हुआ? 2, और yz मेरा क्या हुआ? 1 into 17, 17. So 17 plus 2 is 19. Now this satisfies equation 1, as well as it satisfies that the difference is 32. So on multiplying all these three things, I am getting x, y, z. x into y into z क्या आ रहा है? x मेरा 2, y मेरा 1, z is equals to 17. So that gives me 34. So minimum possible value is 34.